Yes, sir. ओके वंडरफुल। पहली रिक्वेस्ट तो Yes, आप, Yes, sir. sir. दैट्स गुड। पहली रिक्वेस्ट तो ये होगी कि आपके सामने ना आपको एक Yes, sir. हाथ वाला सिंबल नजर आ रहा है बना हुआ, हैंड्स अप का। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने ना मेरा जवाब उसके थ्रू देना है, बजाय इसके कि आप लोग अपना माइक ऑन करें और उसके बाद बोलें। काइंडली जब मैं आपसे कुछ पूछूं या कुछ आपको कहूं कि यार आगे ये समझ गया वट, तो रेज योर हैंड्स, और अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक ऑन करे, क्वेश्चन करे, और फिर प्लीज माइक ऑफ कर दे। ठीक है? Okay, sir. तो प्लीज आप लोग ना अपना ये जो जो मैं प्रेस करने लगा हूँ, ये हैंड्स अप का सिंबल, इसको प्रेस कर दें सारे जो जो मेरी बात को क्लियरली समझ रहे हैं, विदाउट एनी फर्दर डिलेज। दैट्स वंडरफुल। Okay, we have got around 35 participants currently in this meeting. Now, please just take down your hands. Thank you so much. आपके सीआर इस वक्त हमारे साथ है। काइंडली सीआर अपना माइक ऑन कीजिए जरा। Yes, sir. अच्छा सीआर, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी क्लास की ना लिस्ट बनाकर, और मुझे आपने अपनी क्लास की लिस्ट इनके ईमेल एड्रेसेस के साथ देनी है, जो यहाँ पर इनके ईमेल एड्रेसेस। दिस सर वे वो आई विल बी एबल टू ट्रैक द अटेंडेंस। सर वो लिस्ट तो मैंने सेंड की थी जिधर से आपने ऐड किया, उसमें सारे ईमेल एड्रेस, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ है। ओके, वो मेक श्योर के जिनकी तो रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहे हैं वो तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, वो तो दे आर ऑल गुड। लेकिन जिनके नहीं शो हो रहे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर्स, उनका थोड़ा सा मेरे लिए मसला होगा उनको अंडरस्टैंड करने में। तो अगर पॉसिबल हो सके तो वो अगर लिस्ट में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको पॉसिबल हो सके तो करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है? सर वो लिस्ट मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा, पड़ी हुई है। हाँ, दैट विल बी गुड, दैट विल बी गुड। ओके ओके सर। अच्छा, अब इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि फर्स्ट आई विल I would like to ask that whether all of you got the videos that we shared with you earlier. Quick video, I think, consolidation tests related. Please raise your hands if you have already got the video. That's good. I can see few of you haven't raised your hands. That means maybe those haven't got the videos yet. तो काइंडली आपके क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जिसको पहले भी यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए, उसमें आप में से कोई एक बंदा, सीआर इज एक्चुअली द राइट पर्सन फॉर दैट, टू प्लीज शेयर इट विद एवरीवन। वो जो वीडियो आपके साथ की थी ये आप तक पहुंच गई होगी, कंसोलिडेशन टेस्ट वाली वीडियो। उजैर, आप ये शेयर कर लें तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि शेयर हो गई है। सर वो जो आपने पहले 14 मिनट वाली वीडियो सेंड की थी वो तो मैंने शेयर कर दी, और उसके साथ लेक्चर नोट्स भी। नहीं, वही, उसके अलावा कोई नहीं, वही वीडियो है। सर वो तो शेयर मैंने ग्रुप में भी कर दी हुई है और शायद टीम्स में भी अपलोडेड है, वो टीम्स में भी अपलोडेड है वो। दैट्स गुड। अच्छा, अब मैं जो ना आप लोगों से थोड़ी सी ये कि हम थोड़ा रूल्स इसके बारे में क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी भी क्लासेस ले रहे हैं, तो विल कीप इट वेरी वेरी सिंपल। इन द स्टार्ट वी विल गिव यू 10-15 minutes, so everybody should be connected. I can see 40 participants in this meeting, and I expect around 45-46 people to make sure that everyone is here. So we'll wait 10 minutes for that, and then after that you're supposed to run that video in your own devices while still being online. And then when you finish that video, you come back and we start discussing our day's task. So once the task is over, we'll take your questions, and once that is done, it's good to go. We'll finish the class. Is that right? Yes sir, it is right. Okay. So kindly please sit down and watch the video in your own devices. So it is currently the time here is around 10 past 2.
So I will give you 20 minutes to all of you, and meanwhile just please stay online, and after 20 minutes I will get back to you. Do not leave the class, please stay online. Okay, Yes, sir. so please, those who have started watching the I think all of you should be finished with the video by now. So I will share my screen with you, and this way we will be able to start our discussion. Can you please see my screen now? Can somebody say yes or no? Sir, जी हमारा सब भी visible है ना screen? yes, sir, it is. Yes, sir. Visible. All right. जी सर Wait नजर आ for रही है couple of. We'll wait for a couple of more minutes, and then when everybody's here, when all hands are raised again, we'll start with the discussion, inshallah. Yes, please. Those who are done, start raising your hands. And we will start with our discussion for today's topic. All right, as you have already seen in the video, it is quite clearly described that what is consolidation, and I will try to actually bring more sense to this with this slight description of our problem statement today and what we are going to cover. In particular week, we are only discussing the theory behind the consolidation test. You may call this as an introductory class as well. And then in the classes to follow, we will be trying to cover, means the next class we'll be looking at the performance of this test right from the scratch. Mr. Amar is in the process of preparing a video for us, or we will share a link with you from comprehensive YouTube video in case we are unable to make a comprehensive video on our own. So it is still a preparation process. We'll let you know well before time, hopefully around this weekend. So consolidation is a settlement is a property that evolves with time. Now you've already studied compaction. Consolidation and compaction have similarities, and you will be covering this in your theory class as well. But over here, let me just uh, share with you that there's only one difference between consolidation and compaction, and that is the type of fluid that is coming out of the voids when we compress the soil.
In both cases, the compactive effort or the compression is being applied by the normal loads, and the soil voids are squeezed, and whatever is there inside the voids, if it is air, the process of getting the air out by applying the compactive effort is called compaction. But if you apply a sustained stable load for a long period of time and the soil is saturated, then the water will take that load initially, and with time the water will start to find its way out of the voids, and eventually after several years maybe, or several months maybe, or several decades maybe in some cases, the finally the water will come out of the voids, and it is the soil particles who will eventually take that pressure or that stress that is coming to them. Now this time dependent process whereby the water is coming out and eventually soil is taking all the load after facing the deformation, this process is called consolidation. We also call that uh, primary consolidation, because the entire process occurs during the period which is generally classified in geotechnical engineering as the primary consolidation period. Now, if we just take this clay sample, which you can see on your screens, I'm zooming it in. This is actually clay deposited inside the ground, maybe several hundred years ago, or maybe thousands years ago. And you all know that we have already covered that how soil is being deposited. It is generally being deposited through alluvial process, colluvial process, glacial process, fluvial processes. So we have covered that in our very first few weeks of Geotechnical Engineering 1 before the midterm. So this clay is being deposited here and it may be having an underlying layer of sand, or maybe a bedrock, or maybe gravelly layer, and then we may get some deposition occurring because of some freshly deposited sand or on top of the clay layer. So this is an idealized figure whereby the thickness of the clay layer is nearly constant. However, in field it doesn't happen so. So the thickness of the clay may be variable, and this may be just because it was deposited over time by the natural processes. Now, when the load is being applied on the natural surface level, generally in case of clay under the groundwater table, it is expected that clay is saturated, means all its voids are filled with the water. And when you construct something on top of the natural surface level, the load is supposed to be transferred to first this sand layer, which will give its settlement within a week or so of construction. But then the load is being transferred to this clay layer. And now when this clay layer is being squeezed by the applied loads, this squeezing will result in the water coming out of the voids and getting inside this sand layer on top and this sand layer in the bottom. The extent of the clay layer is considered as infinite on either side. So there is no sideways movement of water, but the water is more likely coming towards the sand, as the voids in the sands are much larger than those of clays. So you might take an example of the sponge in your kitchens, and that sponge, when it is squeezed, it depresses, it deforms, and the water inside the sponge comes out of the surface. So same is the case is with this clay layer, which definitely is not squeezing with the rate a sponge will deform, but it takes very long time depending upon the interconnectivity of its voids. So the load is being transferred to the clays, and after several years, the clay will be getting the final compression, and that compression will result significant settlement on top of the natural surface level that will be reflected in the form of cracks in your walls, or maybe sagging or hogging in your walls, or maybe differential settlement where this clay will be settling more, and somewhere you may not have clay underneath the structure. So over there, you might not get that much settlement with time. So this is the overview of why we need to discuss this. Our scope here is to actually look into various very important soil properties, and 5 of them are rate of consolidation, that how fast or slow the consolidation will evolve. Degree of consolidation at any given time means that if a soil had to consolidate and has to yield 50 millimeter of settlement during its design period of maybe 50 or 60 years, then how much consolidation or how long it has
it would take to consolidate to 50% of that anticipated settlement, means 25 millimeter. So if it takes around 20 years to consolidate by 25 millimeter, then that is called the degree of consolidation of 50% will be achieved in 20 years. Now we determine that in the laboratory, and generally why we do that in the laboratory, because the laboratory tests are quick to conduct and easy to conduct as well. How we will be discussing in this class, and in the next week we will show you through video demonstration. Mr. Amar probably would be able to show you some of the setups today, and then later on in next week we'll be discussing the performance of this test. Now then we need to have the pressure void ratio relationship, which is a very important graph. Through that graph we determine the coefficient of consolidation at various pressures, and also the compressibility index or compression index, which is these two properties, coefficient of consolidation and compression index, are required for the calculation of consolidation settlement in numericals that you will be solving in your theory class. Apparatus required, I've already discussed that in the video. So, and also when we will be performing the test, we'll let you know it again. How do we conduct a laboratory test is that we cannot take the entire soil layer, but we take a very small representative sample, as you can see in the video. Is it visible to you? Yes, sir. That's good. So we take this sample. This may not be exactly the same sample as you see here. It may be a big chunk of the soil that is being taken, maybe in the form of a excavation pit, or generally under the water table. Excavation pits are not possible, so we use the SPT or maybe other sampling techniques, shell bite tubes, and we recover an undisturbed sample and we take that to the laboratory and we trim it short to our specimen size, which is fitted inside a ring. Now that is actually placed inside this consolidometer, which has got two porous plates, one at the top of this ring. This particular ring, we place one porous plate at the top, one at the bottom, as you can see over here, and then we have got this green color loading cap, and that's a loading assembly, which is generally in the laboratory we use a lever arm assembly, as you all have already understood in your matriculation and FSC classes, that it's a very basic principle of machines in physics, whereby we can use very small effort and we can apply very large loads using the lever assembly. So we'll show you some lever assembly as well. Then we've got a dial gauge, because now this ring is actually a solid ring that you see a gray color line around this specimen, or it is more visible over here. So this is a solid metallic ring. It will not allow the soil to deform in either ways. But the only way of deforming this sample is actually to compress it and shorten its height. Do you agree with this or not? Means if I have to compress this specimen, it will only squeeze in its height. It will only give deformation in its height, but it will not go sideways, because we have got a jacket around it, metallic jacket. Then we fill the entire cell with the water, just to make sure that our specimen, which was saturated before the start of the test, should remain saturated during the entire test, so that no vacuum, no back pressure should be generated while we are trying to squeeze the sample, we are trying to compress the sample. We need a stopwatch to make a count for the time. Sample preparation has already been covered in the video class, so just bringing an undisturbed or maybe a remolded sample in a shopping bag, or maybe a big bag, gattu jisko kehte hain. So we put it in there, that we bring it to our laboratory, we moist it and we compact it to the required compaction level. From the compaction sample, you have seen that sample already. So we take a very small biscuit of soil that is fitted inside the ring. The procedure is now very simple, and I've covered that in the video. Is that we make a sample and we place it inside the distilled water for about 15 minutes, or by keeping them submerged distilled water for 4 to 8 hours. Fittings of the consolidometer, which is to be enclosed, shall be moistened. Everything should be moistened, so your soil should not lose the moisture because of the heat difference or humidity difference. So assemble the consolidometer, position the pressure pad, which was actually this green color cap, and on top of this green color cap we apply the pressure.
position the dial gauge. You can see the dial gauge is placed on top of this cap, and it will tell you how much deformation is occurring as that cap moves down. Then fill the mold with the water, and the magnitude of this load should be chosen such that there is no swelling. It should be not less than 50 gram per square centimeter for ordinary soils and 25 gram per square centimeter for very soft soil. So you actually saturate your sample under this load so that no swelling should be reported. Note that the final dial gauge reading under the initial load, apply first load of intensity of 0.1 kilogram per square centimeter and start the stopwatch simultaneously. Now, why do we need this sitting load, this initial sitting load? This is our starting point. So we keep this load for 24 hours at least, and we note down all the dial gauge reading meanwhile at maybe 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, and so on. 1 hour, 2 hours, 6 hours, 12 hours, and then 24 hours. We keep this load, we note down these readings, we make sure that during the placement of these readings, how long these readings are there. So we need to make sure that under this load, whatever the amount of settlement will occur, we will note it down in our test. Once the settlement is squeezed, that may be squeezed after 10 hours, 12 hours, maybe 6 hours in some soils, and maybe 18 hours in some soils. So you may apply the second load increment that will be double of this amount, 0.1 and 0.2 kilogram per square centimeter, and so on. We may reach up to 8 kilogram per square centimeter in an ordinary consolidation test, and maybe 16 kilogram per square centimeter, or maybe more in some of the other types of tests, consolidation tests on different soil types. Are you getting my point? That we need to increase it with 24 hours wait of how much a load will cause the settlement. इसमें जल्दी जल्दी नहीं करना आप लोगों ने. It needs not to be very quick. Okay, then moving forward, you take down the readings, you increase the pressure, as you can see, double and then double and then double of that, and up to 8 kilogram per square centimeter in your current class. So once you are done with the test, means when you apply from, say, from 8 to 16, there's no further settlement. That means your test is finished. And once it is done, you will start taking down the load exactly in the same order and exactly in the same way. You will wait for 24 hours for each load to be decreased, and finally you reach down to the initial value of 0.1 kilogram per square centimeter before you terminate your test. Meanwhile, you take all the recordings. These are some of the very important calculations that we need to keep into mind. That is, first initial height of the sample, then the change in the height of the sample through this formula, and then you have to calculate the void ratio by using this simple formula in which h is the initial height, hs is the final height, and divided by the final height. Coefficient of consolidation may be calculated using these two simple techniques. Compression index, we have got various other relationships for compression index, and coefficient of compressibility, coefficient of volume change, and coefficient of permeability are calculated using these simple correlations. What type of graphs do we need? We need actually three types of graphs. You can see dial reading versus the log of time, then the dial reading versus the square root of time, and finally the void ratio versus the log of pressure, average pressure, natural log of average pressure. So these are some of the precautions that you might need to know. That's the actually observation and calculation. When we will be performing calculations in the third week, we will come back to this again, but just over here you can see that this is the log of your test. Ring dimensions, height, area, initial dial gauge reading, specimen height, specific gravity of the soil. For different calculations, you need to know these preliminary information. You need to place it over here. This is exactly the same sample that we use for our laboratory test here at Civil Engineering Department of UET Lahore. We perform the commercial tests and we give them results in this type of form. We note down the results in this form. You can see that first load increment of 0.1 and time in minutes at 0 minute, at 0.25 minutes, which is exactly 15 seconds,
then 60 seconds, then 120 seconds, then 4 minutes, then 8 minutes, 15 minutes, so on up to 24 hours. If you have readings being going on and on, deformation being still carrying on, you may actually go beyond 24 hours as well for one load increment. Then you go for the next load increment, next to that, then 1, then 2, then 3, 4, and then 8. And so on. If you need more load, you need to apply more load as well. Observations of while unloading, if you're performed your test at 8 kilogram per square centimeter, you have to come down to 4, 2, 1, 0.5, 0.5, 0.2, 0.1, and so on, and you have to note down the dial gauge reading. So it is better to note down the dial gauge reading when you actually reduce your load from 8 to 4. Take first reading at maybe around 0 second, 15 seconds, sorry. Then some mean in the middle somewhere, and then after close to 24 hours when you are about to reduce this further to 2 kilogram per square centimeter, and so on. So take the average of all those 3-4 values that you have taken during that test. You should remember the moisture content determination calculation. So we all know moisture content is a very important property, so we need to track of moisture content, because if the moisture content varies, that means your saturation is compromised, and that means your specimen response is not repeatable, so test is not reliable. Finally, you can see this data sheet for consolidation test pressure versus void ratio. So that's the final dial gauge reading, that's the change in specimen height, we calculate from the dial gauge reading differences. Final specimen height will come from original height minus the change in height, h minus delta h. That's the height of the soil solids. You must be able to use the correlations that we have already covered before the midterm in our physical correlationships. Then the height of voids, then the void ratio is actually simply the VV over VS, if you recall. Then we have got this average height during consolidation, then fitting time at T90, so this comes from the curve, and then coefficient of consolidation using those relationships that I showed you earlier. You will be covering most of these things in your theory class, so that's why we are going a bit slow. We are going slowly. Today we are demonstrating you this. You will cover every such things in the theory class, and Sarat Sham will explain how to calculate all these CV and AVs and these graphs between various types. That's how a graph looks like between deformation and time. So this initial portion that occurs very, very quickly within, say, no time, maybe a week or so maximum. This is called the initial compression, and generally it is also called the preloading, because soil would be having this much load initially for a long period of time. Then we get the second phase, which is called a very long phase, takes very, very long time for some soils, and this is called primary consolidation. That occurs due to the dissipation of the pore water pressure. And finally, we have got a very again small portion that may take very long time, but the deformation resulting from that particular time may not be comparable to the previous portions. So this is called secondary or creep, secondary consolidation, or creep as well, plastic readjustment of particles. So this is generally occurring because of the rolling and sliding of the fire, finally rolling and sliding of the particles under load. So that's all for today. We'll be again coming back to the observations and calculations in our third week. In our second week, that is the next week, we'll be showing you some of the demonstrations of this test. So I'm closing this file now. Instead of closing, rather I'm actually minimizing it. Now please, those who have got questions, please start raising your hands one by one. Sir, question से पहले मैं इन्हें दिखा दूँ सारे ये apparatus? हाँ, that will be great. मैं जरा नमाज मुकम्मल करता हूँ, इतनी देर आप ना इनको प्लीज वो दिखा दीजिए. काइंडली प्लीज अटेंड टू सर. मैं ये अपनी स्क्रीन जो शेयर कर रहा था मैंने उसको बंद कर दिया. तो काइंडली सर अमार आपको दिखाने लगे हैं कुछ थोड़ा सा लेबोरेटरी का माहौल और कुछ चीजें. तो प्लीज अटेंड टू दिस केयरफुली एंड लिसन टू हिम, एंड देन आई विल बी कमिंग बैक टू टेक योर क्वेश्चंस बिफोर वी क्लोज ऑफ द सेशन. प्लीज कैरी ऑन. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, ये यहाँ पे मेरे सामने सारा कंसोलिडेशन का मटेरियल पड़ा हुआ है जो हम apparatus इस्तेमाल करते हैं. ये हमारा, this is our loading cell. In this container of water we have porous stones and filter paper.
These are consolidation rings of various sizes. This is the collar for the loading cell, and this is the loading cap. So how this is assembled is first we place the porous stone inside the loading cell, and then also the filter paper. Whose mic is on? Please turn your mic off. Please mute it. Okay, after this, now this consolidation ring already has a soil sample inside it. So what we do is we fit the collar on top of it. And we place filter papers both above and below the soil sample so that when the water is expelled from the soil, it does not carry out soil particles with it. And then when we tighten the bolts, after assembling this entire load cell, it's carried over to these load frames. One is already placed over here. Sir mentioned that it's a lever assembly. That means that this entire load frame is exerting its pressure on the loading cap, and it's deriving its pressure from this lever over here, which is connected to a hanger on which we place our weights. So the function of this is that whatever amount of weight we place on this, the lever arm of this is a factor of 11. So whatever weight we place on this, 11 times that weight is applied on the soil over here. Okay. Now, before we apply each weight, you can see that there's a screw lock over here. This prevents the weight from applying on the soil immediately when we place the weight, because the moment you place the weight, the moment the weight starts acting on the soil, you have to start the stopwatch so that you can record the deflection of the settlement of the soil alongside the intervals of times that you have to check it at. So this lock is there to prevent the load from being applied until you are ready to start the stopwatch. When you start the stopwatch, what you do is you loosen this lock and the load is applied on it. The moment the load is applied on the soil, the dial gauge will start showing deflection. Okay. Now, one thing you have to make sure, the sir also mentioned in the class, that you have to keep this filled with water so that you ensure that your sample is completely saturated throughout the course of your test. Now over here, you can see that there's a table. It has a time of various intervals. You also saw that in your slide over there of 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, so on till 24 hours. Now, normally the practice in the lab is that you monitor the deflection of the dial gauge at these intervals. Now, it can go up to 24 hours. However, if it reaches such a point that, say, after 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, the reading is consistently staying the same, that means that it is showing no more deflection. Then what you can do is that you can move on to the next load. सर वीडियोस की समझ नहीं आ रही थी सर, किसी भी ऑपरेटर्स की हम देख ही नहीं सके, ब्लर आ रही थी तस्वीरें सारी, कुछ भी नहीं आया सर। नहीं सर आप इस तरह आवाज आ करें रही सर वीडियो, सर अच्छा बात सुनिए सर मेरी, वीडियो एक बना मिनट। let me Bilal, let me please speak, let me speak।
एक्चुअली ये जो हम इस वक्त क्लास पढ़ रहे हैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और उसके बाद ये वीडियो आपके लिए विजिबल भी होगी। तो इसमें अगर फर्ज किया किसी से कोई चीज़ मिस हुई है ना, मसलन किसी को ब्लर आ रही थी या somebody has missed it, तो एक तो वो आफ्टर द क्लास इज ओवर ही कैन एक्चुअली क्विकली गो अराउंड। आपको पता है वीडियो के अंदर आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो आप उस पोर्शन को खोल के क्लैरिफाई फर्दर कर सकते हैं। मेरी डिस्कशन में अगर आपको कोई लगा हो कि कोई चीज़ कोई पॉइंट रह गया था तो आप वो भी देख सकते हैं। अमार साहब ने जो आपको डेमोन्स्ट्रेट किया आप वो भी देख सकते हैं। सारे ये सबके लिए एक चीज जिसका आप सबने ख्याल रखना है वो ये कि काइंडली जब तक ये क्लास रन होती है तब तक आपने क्लास में ऑनलाइन रहना है। अगर आप ऑफलाइन हो भी जाए किसी वजह से तो डू कम बैक बिकॉज यू कैन ज्वाइन द क्लास एवरी टाइम। आपका सारा लॉग हो रहा होता है, ये अटेंडेंस आपकी जो है ना सारी की सारी इसमें खुद ब खुद लॉग हो रही होती है। इफ समबडी come in the start and he is absent throughout the class and he comes back in the last few minutes, that will be bad for him, okay, because the entire thing is already registered. तो मुझे कोई ये नहीं मसला नहीं है आप लोगों की अटेंडेंस से। अगर किसी को प्रॉब्लम्स हो भी रहे हैं तो वो बार बार आ जाए, कोई इशू नहीं है उसमें, ना इंटरप्शन होती है ना कोई प्रॉब्लम होता है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है मुझसे रेलेवेंट, मेरे डिस्कशन से रेलेवेंट, तो आप अब भी पूछ सकते हैं। आप नेक्स्ट क्लास में भी प्रीवियस क्लास का हवाला देकर पूछ सकते हैं। इट डजेंट रियली मैटर, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इस बारे में आपको। और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करता चलूँ कि मैंने आपसे वीडियो जो मैं बनाकर शेयर करूंगा पहले प्रायर टू दैट, वो भी आपके पास मटेरियल है, आपके पास पीडीएफ फाइल्स भी मटेरियल होंगी। हाँ, हमारे साहब यहाँ पर आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो वो वीडियो भी आपके पास विजिबल अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अब जो ना, अब हमारे साहब दोबारा अगर एक दफा दिखा दें आपको तो इंशाल्लाह दैट विल बी ग्रेट। हमारे साहब काइंडली इनको एक दफा दोबारा दिखा दें। मैं अपना वाला म्यूट कर रहा हूँ माइक। उजैर मैं आपका क्वेश्चन बाद में लूंगा, इसके बाद लूंगा प्लीज। ठीक है सर, मैं भी करता हूँ। जी, ये हमारे पास सामने ये हमारा कंसोलिडेशन टेस्ट के apparatus है। This is the load cell. These are the porous stones, filter paper, consolidation ring, the collar which fits inside the load cell. These are rings of other sizes, and this is the loading cap. So how we assemble this is, first we place the porous stone and then the filter paper. We have to place a filter paper both on top and below the soil so that in case when the water is expelled from the soil, there is no chance of the soil particles being washed out with it. These are bolts to tighten the assembly. Okay, are you with me so far? This is the entire assembly for the load cell. Now there's another load cell that's already prepared over here, which is fitted inside the loading frame. As you can see here, the loading frame is applying pressure on the loading cap of the load cell, and the top is connected to a deflection dial gauge. So when weight is applied and the soil begins to consolidate and settle, this dial gauge will start to extend and you will be able to see how much settlement is taking place. Now, sir mentioned earlier that this consolidation is done with a lever assembly. This is the lever which is connected to the load frame, and connected to this lever is the hanger.
Now on this hanger we place various loads that the various intervals of loads that we have to carry throughout the experiment. And so the lever arm for this is 11, which means that whatever load we place on top of the hanger, that will be multiplied by a factor of 11, and that amount of load will be applied on the soil specimen. Now you can see here there is a clamp which we can use to lock the load, so that when this is completely tightened, if you apply load on the lever, it will not be applying on the soil, not until we loosen this. This is used so that the moment you loosen it, someone starts a stopwatch, and then according to the stopwatch time intervals, you determine when to take the reading from the deflection dial gauge. Then after various intervals of time, 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes, and so on, you measure you record the settlement via the dial gauge. And then after 24 hours, or if the dial gauge reading is consistent throughout the various time intervals, then you switch to you add more weight to the assembly until you reach the required amount of load you have to place. And you record each for the required amount of time up to 24 hours. Now, after you're done with the loading, then you switch to the unloading, where you start by removing, leaving 1/4 of the weight and removing the rest, taking the reading after a certain period of time has passed to see how much the soil has started to swell or expand once the loading is lightened, and then you keep on doing this until you reach the seating pressure. Are there any questions regarding the assembly or the performance? Geo सर ये जो हम पोरस स्टोन यूज कर रहे हैं इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ये पोरस, इसका क्या मतलब है कि इनके थ्रू वाटर फ्लो कर सकता है। अगर हम कोई परमेबल चीज रखते हैं इसके ऊपर और नीचे, तो फिर तो वाटर ने वहीं ट्रैप रहना था। तो पोरस का ये पर्पस है कि ये इसके थ्रू वाटर को पास होने देता है। ओके सर, थैंक यू। Anyone else? सर वो सर जहाँ से ने वो स्लाइड्स में ऑपरेटर दिखाया था जिस पिक्चर में लोड लग रहा है, ठीक है, उसके दोनों साइड पे वो ब्लू शेड एरिया में सर वाटर को रिप्रेजेंट किया गया है। दोबारा सर वो सर जहाँ से हमने जो स्लाइड्स में ऑपरेटर्स की पिक्चर दिखाई थी, उस पिक्चर में जहाँ जिस पिक्चर में लोड लग रहा है ऊपर से, उस दोनों साइड में जो ब्लू शेड से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको वाटर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक सेकंड मैं इसका जवाब देता हूँ, 1 मिनट जरा अमर साहब काइंडली। जी जी, आप इसकी बात कर रहे हैं जो ब्लू शेड आपको नजर आ रहा है साइड्स पर, राइट? जी बिल्कुल सर। बेटा ये इशू ये है कि ये जो ना एक 2 डायमेंशनल फिगर है, और 2 डायमेंशनल फिगर में आपको ना क्रॉस सेक्शन दिखाया जाता है जस्ट फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव। तो ये बेसिकली पानी चारों तरफ है इसके, जैसे सर ने भी अभी आपको दिखाया होगा। अगर आप इसको प्लान में देखें तो पानी इस तरह चारों तरफ है, लेकिन जब आप एक सेक्शन काटते हैं तो वो पानी बस सिर्फ आपको दो तरफ नजर आता है। तो ये इस ये राउंड एक बात समझ गया, ये मैं दिखा दीजिए। मैं स्क्रीन को कर रहा हूँ अनशेयर। ये अब आपको नजर आ रहा है ना, ये इसके अंदर पानी है। जी सर। ये इसके अंदर पानी इसकी साइडों में भी है। ये मतलब ये एक सर्कल है ना, ऊपर से अगर देखें तो ये सारे तरफ से ये पानी है। तो वो जो सर ने आपको फिगर दिखाई है ना, उसमें इस तरह काटा हुआ था और आपको यहाँ इस साइड से पानी नजर आ रहा है और इस साइड से पानी नजर आ रहा है, लेकिन है थ्रू आउट ये सारा। हमारे थोड़ा सा पानी डाल भी दे, बॉटल से ना थोड़ा सा पानी डाल भी।
पर सर इस वाटर को क्यों डाला जा रहा है, काइंडली सर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इसको? इसका इसलिए डाला जा रहा है ताकि हम इंश्योर करें कि थ्रू आउट आवर एक्सपेरिमेंट हमारा ये सैंपल सैचुरेटेड रहे। देखिए इसका अगर मॉइस्चर लॉस होगा तो सैचुरेशन कंप्रोमाइज हो जाएगी ना। मॉइस्चर अगर स्पेसिमेन में से कम हो जाता है तो वो बेसिकली आपकी सैचुरेशन तो यही है ना कि आपके वॉइड सारे वाटर से फिल्ड हैं, लेकिन ड्यूरिंग कंप्रेशन और ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लंबा टेस्ट है, इट्स नॉट एक्चुअली अ कपल ऑफ मिनट्स टेस्ट, सो इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर अराउंड अ कपल ऑफ वीक्स। एक टेस्ट 10 से 15 दिन बासानी चलता है, तो इस दौरान में आपकी लाइकलीहुड है कि पानी ड्राई अप हो सकता है, स्पेशली आजकल वी गॉट अ लॉट ऑफ हीट आउट देयर, टेम्परेचर डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, so you ensure that there is a distilled water around your specimen। distilled इसलिए कि उसमें एयर वगैरह नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपका आम टैप वाटर है उसमें एयर वगैरह होती है और दूसरे गैसेस वगैरह उसमें मिक्स्ड होती हैं, soluble gases। is that right? उसके अलावा ओके ये सर। है कि आपने जो आपके पोरस स्टोन्स हैं फिल्टर पेपर, उनको भी आपने इस्तेमाल करने से पहले सोक करके रखना है ताकि ये ना हो अगर वो खुश्क हो वो पानी वो सोइल से ही पानी खींच लें। पर सर इस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब ये तो आप पता नहीं पूरा लेक्चर सुन भी रहे थे या नहीं, ऑब्जेक्टिव्स ही तो सर थ्रू आउट सारा डिस्क्राइब कर रहे थे। अब इस तरह मैं आपको क्या बताऊं, ये इस लेक्चर में सर ने आपको बताया था ना कंसोलिडेशन क्या है। कंसोलिडेशन जी जिसमें सर, जी सर। आफ्टर लॉन्ग पीरियड हो जाए, ये कंसोलिडेशन आपकी है। तो अब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेटलमेंट जब हो रही है तो you would want to know for any structure that you're going to make, compaction you're already calculating, of consolidation would be to check the serviceability or whatever reasons you would need settlement for। अब मुझे ये बताओ मुझे कौन बार बार म्यूट करता जा रहा है? जी बिलाल, आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया था? जी सर, ऑलराइट, समझ आ गई। जी उजैर, आपका कोई और सवाल भी है? सर इसमें जो हमने पोरोस्टोन रखे हैं और बाद में पानी डाला है, तो जब हमारी साइल जो है वो ड्राई होगी तो बाहर वाला पानी पोरोस्टोन के जरिए साइल सैंपल में चला जाएगा, और जब लोड अप्लाई होगा और अगर पानी ने बाहर आना हुआ तो वो उसी पोरोस्टोन के थ्रू बाहर आएगा। जी उसी के थ्रू बाहर आएगा, और जब हम वाटर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसी के थ्रू अंदर जाएगा। क्योंकि जब आप शुरू में डालते हैं ना अपना ये सॉइल सैंपल, अगर आपने किसी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल से रिकवर किया है उसमें मॉइस्चर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सैचुरेशन वाले मॉइस्चर पॉइंट पे हुआ हो। तो इसलिए ये है कि हम इसलिए तो इसे पानी से भर के रखते हैं ताकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये सॉइल सैचुरेटेड ही हो जाए। बाद में फिर जो लोड की वजह से पानी निकल रहा होगा वो उन्हीं स्टोन्स की वजह से निकलेगा, लेकिन उससे पहले पानी इन्हीं स्टोन्स के थ्रू सॉइल के अंदर जारी होगी। ओके सर। जी मुबीन। ये फिल्टर पेपर यहाँ पे किस पर्पज के लिए यूज हुआ है? अच्छा, ये फिल्टर पेपर किस पर्पस के लिए यूज हुआ है? अब वाटर अगर निकल रहा है पानी के साथ, मतलब सॉइल पे वो लोड लग रहा है, ठीक है, वाटर आपका उस लोड को इनिशियली रेजिस्ट कर रहा होता है, वो पोर वाटर प्रेशर आपका डेवलप हो रहा होता है। तो जब वाटर एक्सपेल होना शुरू हो जाता है वो भी अब किसी फोर्स से एक्सपेल हो रहा होता है, और आपके जो ये कोहेसिव सॉइल्स होते हैं, अब आपको पता है इनका ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, सी नंबर 200 से पासिंग आपके ये रेंज में आ रहे होते हैं अब 2.002 मिलीमीटर पे। तो अब इतने छोटे पार्टिकल्स के भी चांस होता है कि ये पानी के निकलने के साथ ये भी बाहर वॉश आउट हो जाएंगे।
तो फिल्टर पेपर का पर्पस ही यही है कि वो उस सॉइल को अंदर मेंटेन रखता है लेकिन वाटर को पास थ्रू करने देता है। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये जब तक पूरी पूरी तरह सोख नहीं हो जाता तब तक हम लोड लगाते रहते हैं। जी, जब तक ये पूरी तरह खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम लोड अप्लाई करते रहते हैं। ये हमने इसे खुश्क नहीं होने देना होता, ये हम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट इसे पानी से फिल करते जा रहे होंगे, लेकिन इस पे क्योंकि लोड लगता जा रहा है ना, तो इवेंचुअली उस लोड की वजह से पानी जो बाहर एक्सपेल होना है वो हो जाएगा इसकी वॉइडनेस है। ठीक है। सर जहांजेब के लिए भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो उनके लेक्चर के बारे में, वो भी आप पूछ लें। जी, anybody got any question from me directly, or he wants some explanation or any comments from anyone? अच्छा, आई थिंक ये जो क्लासेस हैं हमारी, ये 50 मिनट्स के लेक्चर्स हैं। तो आई थिंक 1 आवर एंड 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स की हमारी टोटल क्लास बनती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे साहब ऐसे ही है? जी सर, इतनी ही हमारी होती है नॉर्मली। वैसे तो लैब हमारी अक्सर ये घंटे 1.5 घंटे के अंदर हो ही जाता था काम। जी जी, एग्जैक्टली नहीं, हमने इसको बिल्कुल 2 घंटे 40 मिनट तो डेफिनेटली नहीं चलाना, वो 20 मिनट जो भी है। तो हमने इसको कोशिश करनी है कि स्टूडेंट्स को बोर भी ना करें इसमें, और स्टूडेंट्स को जो है वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर कर ली जाए। तो अगर किसी का जी कोई जी क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आई विल अगेन request you to please make sure that you take these classes. Also the material that we share, please go through that material in your spare time. किसी के साथ किसी को लेक्चर अगर इत्तफाकन मिस हो जाता है तो अटेंडेंस के तो अपनी जगह मार्क्स और इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो मैं आई वुड रिकमेंड कि आप काइंडली उस लेक्चर को, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को जो स्पेशली आपसे शेयर की जाती हैं उनको आप जरूर देखें, बार बार देखें। आपके क्वेश्चन इस क्लास के बाद भी हो तो आप डायरेक्टली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दैट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 ग्रुप ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आप काइंडली इस क्लास में जब आते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास से बल्कि ये करेंगे कि जो शुरू के 10-15 मिनट हमारे होते हैं बिफोर वी गो फॉर द वीडियो रिकॉर्डिंग वॉच, आप प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज स्पीक योर हार्ट आउट, जरूर पूछें। आप में से बहुत सारे मेरी तरह के शाई क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो क्वेश्चंस नहीं पूछना चाह रहे होते हैं टीचर से, तो उनसे भी, उनका भी भला हो जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। डू नॉट थिंक कि आपका क्वेश्चन जो है वो कोई बहुत लो ग्रेड क्वेश्चन है या कोई सी क्लास क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क, बट प्लीज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ और डिस्कस करने के लिए नहीं है, किसी पर कमेंट्स करने के लिए नहीं है, आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए रिलेटेड टू दिस कोर्स। तो अभी इसकी जहां तक इवैल्यूएशन का सवाल है, तो अभी तो हमने क्लासेस स्टार्ट की, आज पहली क्लास है तो इवैल्यूएशन नाम की तो कोई चीज फिलहाल तो नहीं है। जब आएंगी साइट तो we'll be discussing it with you and we'll let you know that what will be our procedure of evaluating students. तो अभी फिलहाल आपका सारा का सारा फोकस 100% फोकस आपका ऑनलाइन क्लासेस पर होना चाहिए। अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जो आपको असाइनेंगे वो आप लोगों ने इन टाइम सबमिट करनी है प्लीज। ऑल्सो ये जो लैब क्लास हम अब तक कंडक्ट कर चुके हैं, इत्तफाकन हम वी वर लकी कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मिड टर्म से पहले कर लिए थे। ये अब एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कंसोलिडेशन का, ये 3 वीक्स चलने हैं, एक हो गया, 2 नेक्स्ट वीक्स में ये कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद हमने 2 वीक्स परमिएबिलिटी को देने हैं। तो नेक्स्ट जो लास्ट 2 वीक्स बचेंगे इस सेमेस्टर के, उसमें हमने इवैल्यूएशन करनी है। तो जो 6th वीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर मैनुअल्स इन ऑल रिकॉर्ड्स, और कॉपी पेस्ट से अवॉइड करते हुए आप लोगों ने उसकी पीडीएफ फाइल्स फाइनल बिल्कुल हर चीज को कंपाइल करके फाइनल करके
एक रिपोर्ट की शक्ल में आप लोगों ने इंडिविजुअली सबमिट करनी है। ये दिस विल बी डन इन द 6th वीक एंड इन द 7th वीक we will be going for your comprehensive examination of quiz as well as something else that we will feel कि वो होना चाहिए आपकी evaluation में helpful हो। ठीक है सर इंडिविजुअली के बजाय उन्हें सारों को कह दें कि सीआर को भेज दें, वो फिर आगे फॉरवर्ड कर दे, वरना इस तरह तो बहुत ही this is very important। yes Amar sahab, thank you so much for highlighting this। so please, class is supposed to submit everything to CR makes a comprehensive folder and you can share that Dropbox folder or OneDrive folder or whatever it is with me or with Sir Amar directly। is that right? Luckily there is no hard copy submission so far। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी आपके इस दौरान खुल जाती है और आपको मौका मिल जाता है कि आप डिपार्टमेंट आए क्लासेस लें, तो फिर ये इंश्योर कर लीजिए कि अगर आप डिपार्टमेंट आ सकते हैं क्लासेस लेने के लिए, तो फिर हमारा वो जो यूजुअल सबमिशन प्रोसेस है, दैट इज टू सबमिट योर असाइनमेंट्स इन हार्ड, विल डू दैट। ओके, मिर्जा मोहम्मद साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, सरफराज काइंडली बताएं क्या कह रहा है। जी हमने तो मैनुअली सबमिट करवाए थे जो मैनुअल हार्ड में, तो अब हम पुराने वाला तो कोई थे, अब नए सिरे से बना सकते हैं हम पीडीएफ में। जी ये नए सिरे से, तो ये देखें, ये तो आपके लिए ब्लेसिंग है। आई वुड से कि जरूर बनाएं, खास तौर पर वो लोग जरूर बनाएं जो ये समझते हैं कि उनकी कुछ कमियां रह गई। गेटिंग माय पॉइंट? सर हम यस सर आई एम गेटिंग। मैं आई कैन अश्योर यू कि क्योंकि मुझे पता है यार आप लोग सब बड़ा हार्ड टाइम चल रहा है भाई, सब लोग परेशान है, तो लेट्स मेक इट मेक इट अ गुड एक्चुअली जेस्चर कि आप लोग नए सिरे से बनाएं, सॉफ्ट कॉपी सबमिट करें एंड वी विल इवैल्यूएट यू ऑन दैट। जो प्रीवियस थे वो उनको चलो हम इग्नोर कर देंगे। हाँ, अगर किसी के प्रीवियस ग्रेड्स अच्छे थे तो हम प्रीवियस ग्रेड्स को कंसीडर करेंगे इंस्टेड ऑफ, जैसे वो आपका होता है इंप्रूवमेंट वगैरह के सिनेरियोज होते हैं कि जब इंप्रूवमेंट करो तो अगर अच्छे मार्क्स आ जाए तो वो कंसीडर होता है, और अगर इंप्रूवमेंट में अच्छे मार्क्स ना आए तो आपका प्रीवियस वाला कंसीडर किया जाता है। तो बिल्कुल हम ऐसा ही फॉलो यहाँ पर भी करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि सब लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। ओके सर, वो अगर पिक्चर्स बना दे सर को कहें सेंड कर दें सर हमारे को, वो ऑपरेटर्स की थोड़ी सी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी हमारे साथ तो काइंडली आप ये कर सकते हो, तो ये भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। ग्रुप पे ही, इसी में ही व्हाट्सएप ये सॉरी MS टीम में ही कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर दीजिए, तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा होगा। वरना स्टूडेंट्स से वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी जरा खुली है, जैसे मेरे पास यहाँ घर पे भी और ऑफिस में भी खुला इंटरनेट है, देयर इज नो लिमिट्स, तो यार बजाय इसके कि आप हमारी लैब की पिक्चर्स की तरफ तवज्जो दें, आप ऑनलाइन जाएं, यूट्यूब पर इसकी परफॉर्मेंस की भी मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, इससे रिलेटेड और भी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। और आप अगर सिंपली कंसोलिडेशन टेस्ट ऑपरेटर्स लिखें और गूगल इमेजेस पर क्लिक कर दें, तो आई कैन अश्योर यू दैट यू गेट थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स देयर। ठीक है जी? ओके सर बेटर, थैंक यू। तो फिर भी हमारे साथ को ना, हमारे साथ फिर भी 10-12 कोई अच्छी सी पिक्चर्स बना के अगर शेयर कर देंगे तो वो आप अपने मैनुअल में लगा सकते हैं। यस, दिस इज एक्चुअली अ बेटर ऑप्शन इन दैट वे। हमारे साथ हो जाएगा ये? ठीक है सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अब जो आप पिक्चर्स बनाएंगे ना हमारे साथ, उसके साथ साथ जरा एक कैप्शन भी लगा दीजिएगा कि ये रिंग है, ये लिवर आर्म है, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डिसमिस द क्लास। क्या ख्याल है? ओके, कितने लोग इस चीज पर वोट करते हैं कि हम क्लास को डिसमिस कर दें? हाथ खड़े कीजिए जरा। अच्छा, ये वाहिद मौका है कि पूरी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वरना पिछली बार भी आधों ने किए थे, आधों ने नहीं किए थे। सो दैट शोस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अगेन। आप लोगों ने बहुत अच्छा बिहेव किया है और आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। सेक्शन बी इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट इन 2018 सेशन। तो माशाल्लाह आप लोग वैसे भी काफ़ी बिहेव करते थे अच्छा, आपने यहाँ पर भी डिसिप्लिन रखा है। इन फ्यूचर ऑल्सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग इंशाल्लाह डिसिप्लिन रखेंगे। बाकी आप लोगों ने किसी तरह भी
कोई किसी चीज से परेशान नहीं होना. Whenever you have a question, whenever you have a problem, just come to us, contact us through any channel, through any mean, and inshallah we'll try to resolve that issue. Thank you so much Amar sahab. Let's call off the class. ठीक है अमार साहब, कोई क्वेश्चन कोई कमेंट आपकी तरफ से हो तो? नहीं सर, बिल्कुल ठीक हो गया. Thank you so much all. Enjoy your life, enjoy your days. Thank you. Okay, Allah sir. Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz.